Kavya, keep your camera off. Okay, so we have done till which question? Sir, this is your third class in the in today's. Yes, sir. My third period today. So we have done till ninth question. We have to do 10th one. Yes. Yes, sir. Okay, we have done till question number 9. Now we have question 10. So we have to done 10 question now, 10th question. Okay, let's start. we have with to do question. 10th. Are you all able to see the board? Maybe. Yes, sir. Sir. So let's start with question number 10. Sir, we had two classes before break and one class after break. Yes. So means we had the classes at the odd time. Means the first period odd number, second period even, Yes. but we didn't have third odd and fifth odd. Yes, correct. Okay. Question number 10. If A is equal to -8 and B is equal to -7, C is equal to -6, verify that A plus B plus C is equal to A plus B plus C. Okay. ये हमको verify करना है. So what are the values given? A equals to -8, B equals to -7, and C is equal to 6. C is equal to 6. So these three things are given. A, B, and C. So C is equal to 6. Yes. So verify A plus B plus C is equal to A plus B plus C. So let's take the LHS. So when you verify something, you will solve the LHS and RHS separately. LHS means left hand side of the equation that you have to verify. LHS of the equation is A plus B plus C. This is the LHS. LHS का मतलब होता है left hand side. Left hand side. Okay. So this is the LHS of the given equation that you have to verify. And now you put the values of A, B, and C. The value of A is -8. Value of B is -7. You have to take the values. -7 is the value of B. The value of B is -7, and the value of C is 6. This is the value of C. So now you first solve this bracket. -8 plus into minus -7 plus 6. -8 minus 7 is -15 plus 6. -15 plus 6 is equal to -9. This is -9. Now the RHS. Let us now solve the RHS. The RHS is A plus
B plus C. This is the RHS. Now first you will add B and C. In the LHS we first added A and B. In the RHS we will first add B and C. Okay. Minus 8. Let's put the values. Value of A is minus 8. Value of B is minus 7. And value of C is 6. So minus 7 plus 6. Minus 7 plus 6 is equal to minus 1. Minus 8 plus into minus, minus 1. Minus 8 minus 1, minus 9. So you can see that the answer still is the same. Therefore, LHS is equal to RHS. In the end, you can write hence verified. Last में आप लिखेंगे hence verified. Okay, same answer आ रहा है. So you will write hence verified. Have you all understood? Give a thumbs up if you have understood. Let's start with the next question. Okay, question 11 you will do in homework. Question 11 is your homework. We are starting with question 12. Question number 12. Yes, Amisha. Sir, in the 11th question, I wanted to ask that in an 11th question, we have to again follow the method of LHS and RHS. Yes. In the 11th one, again you will do in the same way. Solve the LHS separately, solve the RHS separately, and then you will see that they will not be equal. LHS and RHS will not come equal because when you are adding two numbers, then you can add in any order. लेकिन अगर दो numbers को हम minus कर रहे हैं तो minus करने में we cannot change the order. Suppose if you subtract 7 and 3, 7 minus 3, 7 minus 3 is equal to 4. 4 होता है 7 minus 3. लेकिन अगर मैं 3 minus 7 करूंगा, that is not equal to 4. 3 minus 7 की वैल्यू क्या होती है? 3 minus 7 की वैल्यू होती है minus 4. So there are different answers in this case. 7 minus 3 is 4, but 3 minus 7 is minus 4. Therefore, you cannot subtract in any order. Addition can be done in any order, but not subtraction. Yash Gangwar. Sir, we have to do 11th question in homework by on. Yes, 11th is your homework. You have to do it on. Okay, sir. Okay. Kaveh Kapoor. Sir, can you please again show the RHS of question 10? Better, can you do it on your own? आपको तो आता ही होगा. अपने आप try करो. Why do you want to see it on the board? If you have understood the question, you try it on your own. Okay, or you can see the recording later on.
If you have any problem, you can see the recording. Okay. I post my videos after the class, so you can just click on the link and see the recording. Prakash. Yes. Sir, I Prakash. want to say that at the last of Sorry. 11th question, sir, I want to say that at the last of 11th question, we have to write again heads verified. No. These two things will not be equal. So we will say that just finally you just show that they are not equal. So बस यही आपको दिखाना है that the two things are not coming equal. बस ये बोल देंगे last. Okay. Okay, sir. Question 12. The sum of two integers is minus 16. If one of them is 53, find the other. दो integers का sum आपको minus 16 given है. So let the other integer. एक इंटीजर आपको दिया हुआ है 53, दूसरा वाला नहीं मालूम है, तो दूसरे वाले को हम x मानेंगे. Let the other integer be x. Question 12. The sum of two integers is minus 16. If one of the integer is 53, दोनों में से एक इंटीजर 53 है, दूसरा वाला हमने x माना. ओके. तो 53 प्लस x. इन दोनों इंटीजर्स का जो सम है वो आपको गिवन है. The sum is minus 16. The sum of the two integers is given equal to minus 16. तो फर्स्ट वाला इंटीजर आपको 53 गिवन था, सेकंड वाला हमने x माना. हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे. x is equal to minus 16. 53 को RHS में लेना है. Minus 53. This 53 is positive. ये अभी यहाँ पर कैसे नंबर है? So when it goes to RHS, it will become negative. Minus 53. Okay. So x equals to minus 16 minus 53. Both the numbers are having the same sign. Same sign जब भी होता है तब हम numbers को add कर देते हैं. So 69, but because both the numbers are negative, the answer is minus 69. Understood? Give a thumbs up and note down the question. Done it. Sir, we have to write the question also. Yes. नहीं question नहीं लिखना है. Only the solution. Don't write Okay, the sir. question. Just do the solution. So do the 11th one. Sorry, 13th one right now on your own. 13th. बेटा कोई बात नहीं, अगर किसी ने क्वेश्चन लिख दिया है तो कोई बात नहीं, आगे आप क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं. जस्ट राइट द करेक्ट क्वेश्चन नंबर और उसके बाद आप बस उसमें सॉल्यूशन करिए. नो नीड टू राइट द क्वेश्चन. निश्चित अग्रवाल. Sir, can you explain the 12th question again? Sir, the voice was not clear. 12th question. What happened? Sir, can you explain it again? You were not in the meeting. What happened? Sir, the audio was breaking. बेटा एक काम करना, वो आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे. I will send the recording. Okay. It will be. I have started explaining the
क्वेश्चन नंबर 12 around after 10 minutes. Okay, sir. मतलब स्टार्टिंग के 10 मिनट्स की वीडियो के बाद आप क्वेश्चन देखिए, ठीक है? Okay, sir. Start doing question number 13 right now, all of you. 13 वाला आपको अपने आप करना है. And give your answer in the chat box after doing the question. Okay, I think almost all of you have done it. And many of you are getting the correct answer. The answer is 96. 96 is the answer of the question. Question number 13. Answer is 96. Okay. Similarly, can you all try the 14th one also? Try the 14th one. Shreyansh, you want to say something? Shreyansh, Sir, I want to say, what? sir, I want to say that in 11th question, A minus B के बाद कौन सा sign है?
In 11th question, what? फिर a minus b in the bracket उसके बाद कौन सा साइन लगा है? A minus B, you use the square bracket first. और फिर A की वैल्यू पुट करो -9, B की वैल्यू भी ब्रैकेट में पुट करिए -6. So when you find A minus B, you will get -9 plus 6 bracket open करने के बाद. And finally LHS में आपको मिलेगा -3. LHS में -3 मिलेगा और RHS में आपको +3 मिल जाएगा. So that means the two things are not equal to each other. Got it? Brackets का proper use. Okay, sir. Okay, sir. Sir, in 13th question, the answer. Sorry, tell me again. Then raise your hand again. Yes. The 13th. Sir, in 13th, and the answer is 34. The answer is 96. Question 13. The sum of two integers is 65. If one of them is -31, find the other. The answer is 96. Question 13. Okay. Yes, Rengwar. To do the 14th question right now. 14th question also you have to do right now. Yes. Do the 14th one also. Okay, sir. Sir, I have done the 13th Okay, very good. question. Kaveh Kapoor. Sir, I have done the 14th question also. तो बेटा ये बताने के लिए तुम्हें माइक ऑन करवाना पड़ेगा. You have to tell this in the chat box. आपको हैंड रेज तभी करना है जब आपको कुछ क्वेरी. Sir, can I send the answer in chat box? Yes, send the answer in the chat box and raise your hand only if you have a query. Sir, can I send the answer in chat box? Okay, sir. Understood, Kaveh Kapoor. Don't raise your hand until you have a query. And keep your camera off. Again and again, keep your camera off.
So 14th one is very simple. The equation will be a minus minus 6 equal to 4. This will be the equation. मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखिए this will be the equation of question 4. A minus minus 6 equal to 4. A plus 6 equal to 4. A equals to 4 minus 6. That means A equals to minus 2. This is the 14th one. Okay. How many of you have got the correct answer? Thumbs up कर दो अगर आंसर करेक्ट है आपका. Very good. All those who have got the correct answers. Very nice. Let's start discussing question number 15. It is to be done in the book only. Question 15. Book में करना है, ठीक है? Let's discuss the question. Yeah, the question is, write a pair of integers whose sum gives 0. एक ऐसा पेयर बताना है इंटीजर्स का जिनका सम आपका 0 आ जाए. चलिए, आई एम टेलिंग यू द आंसर. 4 एंड -4. अगर मैं 4 और -4 को ऐड करूंगा, द आंसर विल बी 0. तो ऐसा कोई भी पेयर आप ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन टेक 6 एंड -6. If you add 6 and -6, the sum will be 0. है ना? Similarly, if you add 9 and -9, again the sum will be 0. So any pair of this type you can take on your own. This is the answer of the first part. नेगेटिव, अगर मुझे सम नेगेटिव चाहिए तो मुझे क्या करना है? दोनों में से एक नंबर नेगेटिव लेना है, एक नंबर पॉजिटिव लेना है, और जो नेगेटिव वाला है उसको बड़ा नंबर ले लीजिए. फॉर एग्जाम्पल -6 एंड 4, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा, द सम ऑफ -6 एंड 4 इज इक्वल टू -2. आंसर नेगेटिव आ जाएगा. तो ऐसा ही पेयर आप भी ले सकते हैं कोई भी. द आंसर इज -6 एंड 4. ये मैंने बताया है, आप अपने पास से भी आंसर लिख सकते हैं. In this case, the sum of the two integers will be negative. Third part. An integer smaller than both the integers. अगर आपको दोनों नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो जो आपको इंटीजर मिलेगा वो बाकी दोनों इंटीजर जिनको आपने ऐड करा उनसे दोनों से छोटा होगा. तो ऐसे केस में हमको दोनों इंटीजर्स जो है वो नेगेटिव लेने हैं. फॉर एग्जांपल -1 एंड -3 ले लेते हैं. -1 एंड -3. इफ यू ऐड -1 एंड -3, इन दोनों नंबर्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे -4 मिलेगा. ठीक है, -1 में अगर मैं -3 ऐड करता हूँ, आई विल गेट 4 -4. ठीक है, और -4 क्या है? -4 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों से छोटा है. Although we have added both the numbers, but still आंसर जो आया है वो इन दोनों नंबर से छोटा आया है. So you can take any two negative numbers, the answer will be smaller than the two numbers. Okay. Fourth वाला तो easy है. An integer greater than both the integers. एक ऐसा इंटीजर बताइए जो बाकी दोनों इंटीजर से बड़ा हो. मतलब आपको दो ऐसे इंटीजर्स बोलने हैं जिनका सम दोनों से बड़ा आ जाए. फॉर एग्जांपल 2 एंड 4 ले लेते हैं. 2 एंड 4. इफ यू ऐड 2 एंड 4 दोनों नंबर्स को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो आंसर क्या आता है? 6. एंड 6 इज ग्रेटर देन 2 एज वेल एज 4. तो
2 and 4 कोई भी पेयर ले लीजिए पॉजिटिव नंबर्स का, the answer will be greater than the two integers. 2 and 4. Fifth part of the question, an integer smaller than 1 and greater than the other. एक ऐसा पेयर बताना है आपको जिसमें यस आरव Sir, can you please repeat question number 3 क्वेश्चन 3 में कोई भी दो नेगेटिव of नंबर्स 15 part? एनी टू, दोनों इंटीजर्स को आप नेगेटिव ले लीजिए, कोई भी दो. ओके, Okay, sir. कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर्स, the sum will be smaller. Okay. सार्थक शर्मा. सार्थक शर्मा. चलिए आगे बढ़ते हैं. लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ऐसे दो इंटीजर्स बताने हैं जिनका सम इन दोनों के बीच में आ जाए. फॉर एग्जांपल 6 एंड -2 ले लेते हैं. 6 और -2 का सम क्या होगा? अगर मैंने एक नंबर 6 ले लिया, दूसरा नंबर -2 ले लिया, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 4. 6 में अगर -2 ऐड कर दूं, आई विल गेट 4. अब 4 क्या है? 4 इज स्मॉलर देन 6 एंड ग्रेटर देन -2. तो दोनों के बीच में आंसर आ गया. So you can take any two numbers. I have given you an example 6 and -2. एक नंबर पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव. Okay. So let's move to question number 16. Question 16. The sum of a negative integer and a positive integer is always a positive integer. Sorry. First part. मैं कौन सा last part पढ़ लूँगा. First part of question 16, you have to answer in true or false. True है या false है ये बताना है. The smallest integer is 0. This is true or false? Okay, मैं आपके माइक्स ऑन कर. First one, true or false? False. Sir, false. 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 Sir, 0. Sir, 0 is an integer which is not positive, not negative. 0 is not the smallest integer because 0 से छोटे Sir, 0 is the greatest integer. because 0 से छोटे इंटीजर्स भी होते हैं. वो इंटीजर्स कौन से होते हैं जो 0 से छोटे होते हैं? These are negative integers. जितने भी negative integers होते हैं वो सब 0 से छोटे होते हैं. So that means 0 is not the smallest. ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? False. -10 is greater than -7. Again false. सबको मालूम है -10 -7 से छोटा होगा. I am saying the answer is false. Of the second part, the answer is also false. बेटा true false भी आपको बुक में करना है, कॉमन सेंस करेगा. Do the true false in the book only. Third part of the question, 0 is larger than every negative integer. Yes, ये बिल्कुल सही बात है. True. 0 सारे negative integers से बड़ा होता है. Yes. All the negative integers are smaller than 0. So therefore this statement is true. Fourth, the sum of all negative integers is a negative integer. The sum of two negative integers is a negative integer. Absolutely true. अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं. जब भी आप दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो सम क्या आता है? नेगेटिव आता है. माइनस. Statement is true. Last one, the sum of a
a negative integer and a positive integer is always a positive integer. एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर का सम हमेशा पॉजिटिव होता है, फॉल्स है। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो लास्ट वन इज फॉल्स।